Dear student, in last video we have seen certain typical examples where oxidation number is somewhat odd. There are certain more examples. See, what is the oxidation number of each carbon in carbon suboxide? See, what is the formula of carbon suboxide? C3O2. What is the structure? C double bond C, again double bond C, double bond O, double bond O. See, here oxidation number of carbon atoms which are connected to oxygen, they have +2 oxidation number, as oxygen have -2 oxidation number. But a central carbon, the star carbon, it have 0 oxidation number. Why it is so 0? Because it is connected to carbon atoms, same atoms. It just like a homoatomic molecules. In homoatomic molecule, oxidation number is 0. So the electronegativity of carbon is one and same. So there is neither loss or gain of electron. That's why it possesses 0 oxidation number. There is one more typical example, that is ammonium nitrate. What is the oxidation number of nitrogen in ammonium nitrate? See, NH4NO3. This is when we see the oxidation number of these two nitrogen atoms, when we have to find out oxidation number. See, NH4 ammonium ion, and this one is nitrate ion. See here, oxidation number of, when we follow the rule, when we consider the oxidation number of nitrogen here, X, hydrogen have +1 oxidation number, number of hydrogen atoms they are 4, that is equal to net charge present on that ion. So X is equal to -3. This nitrogen in ammonium nitrate possesses -3 oxidation number. What about nitrogen in nitrate? So suppose this is X, oxygen have -2 into 3 oxygen atom, that is equal to net charge present on that nitrate ion, that is -1. So X is equal to +6 -1, that is equal to +5. So this nitrogen have +5 oxidation number. One nitrogen -3, another one +5. Extreme cases of oxidation number of nitrogen. Again, there is one more certain example, that is when we look towards brown ring. Do you know what is brown ring? Formation of brown ring, confirmatory test for nitrate. See that the formula of brown ring, you know, Fe in bracket H2O taken for 5 times NO sulfate ion. Sulfate, sorry. What is the oxidation number of iron? It may ask typically. See that sulfate total have -2, nitrate have +1, sulfate have -2. In order to make it 0, so here iron Fe must have +1 oxidation number. It is somewhat typical. We generally use iron, it may have +2 or +3, but +1 oxidation number in brown ring. If you are interested, we may see again some example like Br3O8. See, when we draw its structure, what happens? Br dash Br dash Br. See, this bromine connect with double bond with 3 oxygen atom. It connect to 2 oxygen atoms, and it connects again 3 oxygen atom with double bond. Bromine. See, -2, -2, -2. This bromine, peripheral bromine have +6 oxidation number. Here, as electronegativity of bromine is one and same, that's why they doesn't change its oxidation number. But these 2 oxygen atoms, -2, -2, that's why oxidation number of central bromine is +4. Oxidation number of central bromine is +4. So dear students, if you look
In case of amalgam, oxidation number of metal is 0 because there is no chemical reaction. There is no involvement of electron. That is simply physical reaction. In zinc amalgam, oxidation number of zinc is 0. Metal amalgam में oxidation number कौन से भी metal का 0 ही रहेगा. Now, in last video, we have also seen how to balance a redox reaction. But related with time, when certain question is asked in exam, how to manage time, for that sake, if you are trying to balance by applying each and every rule, then it is time consuming process. In order to reduce time, in order to obtain answer in a short period, there must be certain trick. Now let us see certain example in balancing redox reaction. Suppose question it may be asked like 2 moles of KNO4, 2 moles of potassium permanganate, 2 moles of KNO4 oxidizes how many moles of ferrous sulfate? How many moles of ferrous sulfate? See, in acidic medium, dear students, you know KMnO4. See here, KMnO4, whenever we use acidic medium, its oxidation number changes from +7 to +2 in acidic medium. Okay, when medium is neutral or weakly basic, that KMnO4, its oxidation number from 7 it becomes +4, change by 3. Here oxidation number change by 5. But in strongly basic medium, its oxidation number changes from +7 to +6. In case of potassium dichromate, K2Cr2O7, its oxidation number is +6 here. Its oxidation number in acidic medium, it changes to +3. ये मालूमात होना चाहिए अपने को already. That is so handy. See here. Now we are interested to know 2 moles of KNO4 oxidizes how many moles of ferrous sulfate. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में. अपन एक 2-4 एग्जांपल देखेंगे immediately. See. Try to write the redox reaction. KMnO4 ferrous sulfate लिखे या ferrous ion लिखे, one and same. In acidic medium, it forms membrane dipositive. Here oxidation number of manganese is +7, and ferrous oxidizes from ferrous to ferric ion, Fe tripositive. In order to balance in a short way, what we have to do? Anyway, we have to find out number of moles of oxidizing and reducing agent here. KMnO4 के कितने मोल रहेंगे और फेरस के कितने मोल लगेंगे, ये अपने को बैलेंस करना पड़ेगा. एक there is a one short trick. One substance lose electron whereas other substance gains electrons. This reaction it must be balanced in form of charge. There must be balance in loss and gain of electron. This is very very important principle. अगर एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन जितने देता है तो दूसरे ने उतने लेना ही पड़ेगा. जिसका ऑक्सीडेशन होता है जितने इलेक्ट्रॉन देता है तो दूसरा उतना इलेक्ट्रॉन लेना ही पड़ेगा. फॉर दैट सेक व्हाट वी हैव टू डू? सी हियर डियर स्टूडेंट्स, हियर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ manganese changes by 5 units, whereas iron changes by just 1 unit. We have to cross multiply. इसका जिससे जितने नंबर से 1 से चेंज हो रहा ना, तो 1 नंबर से इसके मल्टीप्लाई करो. इसका 5 से चेंज हो रहा KMnO4 का, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करो. फॉर व्हाट सेक वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई? इन ऑर्डर टू बैलेंस द चार्ज. Whatever may be the change in oxidation number of respective species,
that change in oxidation number, by that number we have to cross multiply. एक से इसका चेंज हो रहा है आयन का, 5 से इसका चेंज हो रहा, तो 5 नंबर से इसको मल्टीप्लाई करो और 1 नंबर से इसको मल्टीप्लाई करो, दैट्स ऑल. KMnO4 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो एक ही रहेगा, वैसे इसको 5 से 5Fe डाई पॉजिटिव. फॉर सेक ऑफ टाइम नो नीड टू बैलेंस टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, खाली इससे ही लेना देना है अपने को. चलो अपन यहां पर बैलेंस कर देंगे, क्या Mn डाई पॉजिटिव प्लस 5 फेरिक आयन. Yet it is not completely balanced, but it is sufficient to know the answer. See that 1 mole of KMnO4 oxidizes 5 moles of FeSO4. Am I right? 5 moles of ferrous sulfate or ferrous ion. So 2 moles of KMnO4. What is question? 2 moles of KMnO4 oxidizes how many moles of ferrous sulfate? That is 2 into 5 upon 1, that is 10 moles of ferrous sulfate get oxidized by 2 moles of KMnO4. By 2 moles of KMnO4. See, there is one more example. अपन इसको ही कंसिडर करके चलेंगे अभी. Okay? Now, second problem. 2 moles of KMnO4 oxidizes how many moles of ferrous oxalate? Very interesting questions. See that. मैं खाली एक चेंज कर रहा हूं, क्या? Ferrous oxalate in acidic medium. Ferrous oxalate का फॉर्मूला क्या है? FeC2O4 in acidic medium. Dear student, try to write down the reaction. See, KMnO4 potassium permanganate plus ferrous oxalate FeC2O4, oxalate ion di-negative, ferrous di-positive, FeC2O4, it forms, क्या फॉर्म करेगा? पहले तो एसिडिक मीडियम में मैंगनीज का कन्वर्शन Mn+7 का Mn+2 में होता है. ठीक है. अभी फेरस it have to convert into ferric ion plus ferric ion, और ऑक्सलेट आयन है तो उसका क्या चरण? कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा. See here, oxidation number of carbon is +4. Here oxidation number of iron is +2. Here oxidation number of each carbon is +3. So यहां पर फेरस का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है और कार्बन का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है. See that as KMnO4 gains 5 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है KMnO4? 5 इलेक्ट्रॉन, ताकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 से +2 चेंज हो रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन ले रहा है. लेकिन ये जो फेरस ऑक्सैलेट है कितना इलेक्ट्रॉन देता है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इट लूजेस? सी दैट. एक फेरस है, फेरस का फेरिक में, यानी 1 इलेक्ट्रॉन Fe देता है. 2 कार्बन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 का +4 हो रहा. ईच कार्बन लूज 1 इलेक्ट्रॉन. देयर आर 2 कार्बन एटम, मींस 2 इलेक्ट्रॉन कौन देगा? कार्बन. सो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स गिवन बाय दिस फेरस ऑक्सैलेट. बस खत्म. अभी इसका जो इलेक्ट्रॉन देता है उस वो नंबर से इसको मल्टीप्लाई करो. ये जितने इलेक्ट्रॉन लेता है 5, इससे इसको मल्टीप्लाई करो. सो इन बैलेंसिंग रिएक्शन 3 KMnO4 plus 5 moles of ferrous oxalate in acidic medium. इधर का तो टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो बिल्कुल बैलेंस नहीं करने की जरूरत, इतना ही सफिशिएंट अपन को. तो भी अपन लिख रहे हैं 3Mn डाई पॉजिटिव प्लस 5Fe ट्राई पॉजिटिव प्लस 2 moles of, yeah, whatever may be the moles, no need to balance it. See here, we are concerning only this reacting species. We are not interested in product because question is regarding this reactant. See, अगर 3 moles of KMnO4 oxidizes 5 moles of FeC2O4 ferrous oxalate. So 2 moles of KMnO4 oxidizes how many moles of ferrous oxalate? So
2 into 5 divided by 3. 10 by 3 moles of ferrous oxalate get oxidized by 2 moles of KNO4. 1 मोल KNO4 कितना करेगा? 5 by 3. Okay. Now again there is one more example we are going to see. See here. 2 moles of KNO4. 2 moles of KNO4 oxidizes how many moles of ferric oxalate? Instead of ferrous oxalate, now we are using ferric oxalate. Ferric oxalate का formula क्या होगा? You know, see, ferric Fe, it is trivalent, Fe tripositive. Oxalate ion, they are divalent. इसकी वैलेंसी से इसको मल्टीप्लाई करो, इसकी वैलेंसी से इसको मल्टीप्लाई करो. So the formula ferric oxalate, Fe2 in bracket C2O4 taken for 3 times, thrice in acidic medium. Try to write the redox reaction. See, potassium permanganate KMnO4. Here oxidation number of manganese is +7. Plus when it react with ferric oxalate Fe2 in bracket C2O4 twice. The product क्या फॉर्म होगा? In acidic medium, you know. अब तो ये आपको मालूम है पक्का. मैंगनीज इसका ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूसेस टू +2. फेरिक ऑलरेडी फेरिक है तो उसका फेरिक का फेरिक आयन मैच होगा. ये प्रेजेंट इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट. इससे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता. +3 रहेगा. बट इन ऑक्सलेट आयन कार्बन दे आर फाउंड इन +3 ऑक्सीडेशन. But they get converted into carbon dioxide. Here oxidation number of carbon dioxide में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +4. So how many carbon atoms in ferric oxalate? There are 6 carbon atoms. हर एक कार्बन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 1 यूनिट से इंक्रीज हो रहा है तो टोटल 6 है. तो ये फेरिक ऑक्सलेट है, इतना ये मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन देगा? It loses 6 electrons. 6 इलेक्ट्रॉन देगा. लेकिन ये KMnO4 ये जो है इसका रिडक्शन हो रहा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो कितना इलेक्ट्रॉन लेना चाहता लेता है? +7 से +2 हो रहा. It gains 5 electrons. It loses 6 electrons. ये बैलेंस है का एक 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा. There is a difference of 1 electron. In order to balance these electron, in order to balance this charge, what we have to do? We have to just do one thing. We have to cross multiply by these electrons. तो क्या लिखूंगा मैं? 6 moles of KMnO4 plus 5 moles of ferric oxalate C2O4 taken thrice, sorry. In acidic medium, there is a formation of manganese, Mn+2, ferric ion and carbon dioxide C. 6 moles of KMnO4 potassium permanganate oxidizes 5 moles of ferric oxalate Fe2C2O4 taken for thrice. So question क्या है? 2 moles. So 2 moles of potassium permanganate. They may ask 2 mole, 1 mole, 3 mole, 4 mole. One can change. Once we know the stoichiometric coefficient properly, we can obtain answer. So 2 moles of KMnO4 oxidizes how many moles of ferric oxalate? So 2 into 5 divided by 6. So that it must be equal to 5 by 3 moles of ferric oxalate get oxidized by 2 moles of KMnO4. बहुत easy है, लेकिन in which medium that reaction carried out वो याद रखो. न्यूट्रल है तो 3 से ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा. बेसिक है तो 1 यूनिट से चेंज होगा. पोटेशियम डाइक्रोमेट है तो इसका भी क्रोमियम का 3 से चेंज होगा. One more example we will see. What happens when 2 moles of KMnO4
oxidizes how many moles of arsenious sulfide, As2S3, arsenious sulfide. See, arsenious, it belongs to nitrogen family, As2S3 in acidic medium. See, वही principle, anyway we have to balance the charge. See, arsenious sulfide As2S3 plus KMnO4, potassium permanganate. Here oxidation number of manganese is +7. Then what happens? See that there is it converts into product AsO4 -3 charge. Then there is a formation of Mn dipositive and sulfate ion. This is not balance reaction. अगर बैलेंस भी नहीं है तो अपने को खाली ये दोनों के नंबर ऑफ मोल्स प्रॉपरली निकालने के हैं. ठीक है. सी हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल असाइन्ड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच स्पीशीज. आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर क्या आएगा? +3. सल्फर का क्या आएगा? -2. मैंगनीज +7. Why I am not mentioning oxidation number of potassium and oxygen? Because they remains unchanged. Okay? जिसका चेंज होता है उसका ही मेंशन कर रहा हूं. यहाँ आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? +5. ओके. मैंगनीज का +2 है. सल्फर +6. सी देखो हियर one KMnO4, 1 mole of KMnO4, it gains 5 electrons. ये तो आपको पक्का मालूम है. अभी इन एसिडिक मीडियम इट हैव टू गेन 5 इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस फ्रॉम +7 to +2. इट गेन्स 5 इलेक्ट्रॉन. लेकिन ये आर्सेनिक सल्फाइड कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? देखो, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 टू चेंजेस +6. व्हाट इज द डिफरेंस? 8 इलेक्ट्रॉन एक सल्फर एटम लूज कर रहा है. यानी टोटल सल्फर एटम कितने हैं अपने पास? 3 है. सो 8 × 3, सो 3 sulfur atom will lose 24 electrons. What about arsenic? Here arsenic +3 का ऑक्सीडेशन नंबर +5 हो रहा है. एक आर्सेनिक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो 2 आर्सेनिक कितना करेंगे? 4. सो 2 आर्सेनिक एटम कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन इट लूजेस. सो टोटल समेशन करें तो arsenic sulfide it loses 28 electrons. It loses 28 electron. See here, now just balance by, अभी ये इलेक्ट्रॉन 28 दे रहा है और ये इलेक्ट्रॉन 5 ले रहा है. 23 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है. तो इज इट बैलेंस? इट इज नॉट बैलेंस इन फॉर्म ऑफ चार्ज, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. देन in order to balance in form of charge, what we have to do? We have to multiply by number of electron, crossing करके जितना ले रहा है और जितना दे रहा है उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करने का. We have to multiply by 5 to arsenic sulfide and 28 to KMnO4. So here see 5 As2S3 plus 28 KMnO4, it form same product. We are not interested in balance for the sake of time. बैलेंस करे तो भी चलता, लेकिन अपने को टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करने का. ये देखो 28 moles of KMnO4, 28 moles of KMnO4 oxidizes 5 moles of As2S3. So 2 moles of KMnO4 oxidizes how many moles of arsenic sulfide? See that 2 into 5 divided by 28, that is 10 by 28, sorry 10 by 28, or one may write 5 by 14 moles arsenic sulfide, that is 5 by 8, sorry 5 by 28. Okay, 5 by 28. So all the best. कौन सी भी रेडॉक्स रिएक्शन है तो शॉर्ट ट्रिक से बैलेंस करने का अटेम्प्ट करो, यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस.
Thank you.